So start. Laws of chemical combinations. So in this chapter, we are going to cover 5 gas laws. First one, law of conservation of mass. Second one, law of constant proportion. Third one, law of multiple proportion. Fourth one, law of gaseous volume, जिसे हम गे-लूसैक लॉ भी बोलते हैं. And last one, Avogadro's law. So let's start with first law. That is first one. We are going to start law of conservation of mass. Law of conservation of mass. So in this law, first of all, the law was given by Anthony Lewis. The law was given by Anthony Lewis. Second thing, the law states that in a balanced chemical reaction, the mass of reactant is always equal to mass of product. Let's see with an example. We will take an example, that is when CH4 reacts with O2, it gives CO2 and water. In this reaction, we know that the mass of CH4 contain 1 carbon molecule and 4 hydrogen molecule. So the mass of 1 carbon molecule is 12 and the mass of 4 hydrogen molecule is
4U, that is atomic mass unit. So on adding these two, we get 16. That is the mass of CH4 molecule is 16. Next, if we see the mass of O2 molecule, here there are 2 moles of oxygen molecule, and the mass of 1 mole of oxygen molecule is 32 U, that is atomic mass unit. That is the mass of 2 O2 molecule is 64 U, if I write the unit. Similarly, the mass of CO2 molecule is 12 U for carbon and 32 U for oxygen. Similarly, the mass of water molecule is, there are 2 moles of water molecules and the mass of one water molecule is 18. So by adding these two numbers, we are getting what? 44 U, and here 36 U. The whole mass, total mass of this reactant becomes how much? 80 U. And the whole mass of this product becomes how much? 80 U. So if you can observe that the total mass of reactant and total mass of product is same. So this is nothing but the law of conservation of mass. The law states that in a balanced chemical reaction, the mass of reactant is always equal to the mass of product. और यही हमने इस रिएक्शन से सीखा कि मीथेन का जब हम कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्टेंट का टोटल मास है 80 U और हमें प्रोडक्ट का भी कितना मास मिल रहा है? 80 U. लेट्स हैव एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेके चलते तो क्या होता है देखते हैं. जैसे सेकंड एग्जांपल देखो कि अगर मैं O2 की रिएक्शन S2 की रिएक्शन करूं O2 के साथ, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हमें देता है वाटर मॉलिक्यूल. यस और नो? इन दिस रिएक्शन हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज किया है. सो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 2U और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है 32U, एंड दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18U. So if you can observe that the mass of reactant becomes how much? 34U, and the mass of product becomes 18U, and this is not exactly equal. Why this is not exactly equal? Because this is unbalanced chemical reaction. Unbalanced chemical reaction. So for unbalanced chemical reaction, the law of conservation of mass does not hold. So if we balance this reaction, that is same reaction, if we balanced, that is H2 plus O2 gives us H2O. And if you balance this reaction, just simply putting 2 and 2, now this looks like a balanced chemical equation. Now just find the mass of reactant and mass of product. What we get? The mass of reactant, that is the mass of 2 moles of hydrogen is 4U. The mass of 1 mole of oxygen is 32U. The mass of 2 moles of water is 36U. Now the total mass of reactant becomes 36U and the total mass of product becomes 36U, because now the mass of reactant and mass of product both are same. This shows that for every balanced chemical equation, you can say that for every balanced chemical reaction, the law of conservation of mass, the law of conservation of mass holds. That's the point. Hope so you understand the law of conservation of mass. Next, one more important point to introduce a new thing to law of conservation of mass, that is
Einstein equation. Everyone knows. According to Einstein, Einstein mass and energy relation. What is Einstein mass energy relation? E is equal to mc square. That is, we can say that ki energy and mass are interconvertible. Energy and mass are interconvertible. Here, what is C? C is speed of light. Speed of light. So let's have a previous year question based on law of conservation of mass. Question is like, question is like, which of the following, which of the following reaction does not obey, does not obey the law of conservation of mass. And your options are your options are first option, carbon plus oxygen gives you CO2. Second option, H2 plus O2 gives you H2O2. Next, sulfur plus oxygen gives you SO3. Last one, H2 plus Cl2 gives you 2HCl. So we have to find which of these equations does not hold law of conservation of mass. So if you can observe that first equation is balanced in terms of carbon and oxygen both. If you can say that, so those are the balanced chemical equation, those hold the law of conservation of mass. Second equation is also balanced. This is also balanced equation in terms of hydrogen and in terms of oxygen. If you observe third equation, that is, this is unbalanced. So unbalanced chemical equation does not obeys law of conservation of mass. So simply we can say that key C option does not obey law of conservation of mass. You can check also last option as well. Last option is also balanced in terms of hydrogen and chlorine. So we can say that this is a balanced chemical reaction. So those reactions which are balanced chemically, those hold law of conservation of mass. And those reactions which are not balanced chemically, that reactions do not hold law of conservation of mass. Hope so you understand the law of conservation of mass that is given by Anthony Levesque. Let's move on the next law, that is law of constant proportion. Next one is law of constant proportion.
Law of constant proportion. First thing about this law, the law was given by the law was given by Joseph Proust. Joseph Proust. Next thing, the law is also called as the law is also called as law of definite or constant proportion. Definite or constant proportion. Next, the law states that statement of the law. The law states that the law states that a sample of pure chemical compound, a sample of pure chemical compound, a sample of pure chemical compound always consist always consist same elements same elements combined together combined together in the same proportion in the same proportion irrespective of its source irrespective of its source. चलिए इस लॉ को समझते हैं. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स उसके सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते बाय मास. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं वाटर, तो वाटर के हमने देखे कई सारे सोर्स है. फॉर एग्जांपल, आपने वाटर के कितने सोर्स देखे? जैसे मैं यहाँ 3 सोर्स लेता हूँ. एक रेन वाटर, दूसरा सी वाटर, तीसरा टैप वाटर. तो इन तीनों वाटर में जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, 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 वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है बाय इट्स मास इन दिस थ्री सोर्सेस इज सेम. दैट इज दिस रेन वाटर आल्सो कंटेन 18 gram of oxygen, 18 gram of its molecular weight by 2U of its hydrogen and 16 of oxygen. Similarly, seawater also contain 18U by its mass, in which 2U of hydrogen and 16U of oxygen. Same that of your tap water also contain 18U by its mass, in which 16U of oxygen and 2U of hydrogen. So this means अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो जिन एलिमेंट से बना है, दैट एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑन द सोर्स ऑफ दैट कंपाउंड. ये हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन सिखाता है. दिस मीन्स वी कैन से दैट वाटर ऑलवेज कंटेन 2:8
that is hydrogen is to oxygen ratio. Sorry, not 2 ratio, 2 ratio 16 of hydrogen atom and oxygen atoms. If we simplify this, we get hydrogen is to oxygen ratio, that is 1 is to 8. Similarly, if I can take example of carbon dioxide. So carbon dioxide always contain 12 ratio carbon dioxide contains 12 ratio 32 of carbon atoms and oxygen atoms. If we further simplify this, what we get? 3 ratio 8. Take one more example, that is in glucose. What is the formula for glucose? C6H12O6. In glucose molecule, the ratio of constituent atoms is carbon is to hydrogen is to oxygen. What we get? How many carbons are there? 6 carbons are there, and each carbon has mass 12 units. Ratio, there are 12 hydrogen atom. Each hydrogen atom has mass of 1 unit. Ratio, 6 oxygen atoms are there, and each oxygen atom has mass 16 units. If we further simplify this, what we get? We get 6 to the, we are getting 12 ratio 2 ratio 16. That is 6 ratio 1 ratio 8. This is the chemical composition of glucose by its element. Understood? Hope you understand. So in previous year, you have asked a question, that is, question is, Swaraj, please mute yourself. Let's see a previous year example. Question is, what is the ratio of masses of elements in 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 hydrogen peroxide? What is hydrogen peroxide? H2O2. Your options are 4 ratio 16, 16 ratio 1, 1 ratio 16, 16 ratio 4. Now they have asked for the ratio of masses in hydrogen peroxide. So if you see hydrogen peroxide, S2O2 consists of hydrogen atom and oxygen atom. In hydrogen peroxide, there are two atoms of hydrogen
two atoms of hydrogen has mass 2 units, and 2 units of oxygen atom has mass 32 units. So on simplifying this, what we get? 1 ratio 16. 1 ratio 16. So if they ask for hydrogen is to oxygen, then answer is 1 ratio 16 is correct. If they ask for oxygen is to hydrogen, then 16 ratio 1 is correct. Okay. So there are two options. That is B and C. Don't confuse in B and C. Here hydrogen is to oxygen ratio is 16 is to 1. This is not answer. Our answer is C. That is hydrogen ratio oxygen is 1 ratio 16. Hope so you understand. Next law. Let's see next law. That is law of multiple proportion. First of all, this the law was given by the law was given by the law was given by John Dalton. The law was given by John Dalton. The law states that the law states that an element an element may form an element may form more than one compound more than one compound with another with another element. For a given element, the masses of for a given element, the masses of other element come in ratio of simple whole number. Now just see what does it law means. Law says that if you have two elements, that is A and A elements that can combine with more than other elements, more than two other elements, that is A can react with B, A can react with C as well. Means and a element can has tendency to react with two or more elements and forms a product like AB2, ABC, AB2 times AC 3 times. But condition is that the mass of one of the element keep constant. That is A is constant in both the reaction. A is constant in the both the reaction. अगर हम इसको एग्जांपल से समझे हाइड्रोजन reacts with oxygen and form H2O. Same hydrogen react with oxygen and form
H2O2. In both the reaction, the mass of oxygen is same, that is 32U and 32U. But the mass of hydrogen is here 4U and here 2U. So जिस एलिमेंट का मास कांस्टेंट है उसके साथ जो एलिमेंट हम रिएक्शन में ले रहे हैं उसके मास का रेशो हमेशा एक होल नंबर में आएगा, सिंपल सिंपल होल नंबर में आएगा। दैट इज अगर 4:U हम लेते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2:1। अनदर एग्जांपल से समझते हैं। वी विल टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज, लेट्स सी, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये NO2, ये एक कंपाउंड ऑक्साइड फॉर्म करता है। सिमिलरली नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये N2O5, ये कंपाउंड भी फॉर्म करता है। बट लेट्स सी, अगर मैं नाइट्रोजन को दोनों रिएक्शन में कॉमन करूं, नाइट्रोजन को दोनों रिएक्शन में कॉमन कैसे किया जाए? देखो, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन लाने के लिए यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन सेम हो रहा है और नाइट्रोजन भी सेम हो रहा है। दोनों रिएक्शन में नाइट्रोजन सेम करने के लिए मुझे यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेना पड़ेगा।
लेट्स स्टार्ट नाउ। इफ यू ऑब्जर्व, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखेंगे तो हमने यहाँ ऑक्सीजन को सेम किया है और नाइट्रोजन को वैरी किया है। जो एलिमेंट डिफरेंट मास के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होता है उसके मास का रेशो सिंपल होल नंबर आता है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहले वाले रिएक्शन में जो नाइट्रोजन का मास होगा वो कितना होगा, 5/2 × 28। और सेकंड वाले रिएक्शन में जो नाइट्रोजन का मास होगा वो होगा 2 × 28। सो व्हाट वी आर गेटिंग, द रेशो ऑफ दिस टू एलिमेंट्स, दैट इज 5 × 2 × 28 रेशो 2 × 28। What we are getting, 28 get cancelled, we are just getting 5/2. Hope so you understand. Next, the next law is, this is the simple law of multiple proportion. Now let's see the next law, that is Gay-Lussac law. Gay-Lussac law of gaseous volume. Gay-Lussac law of gaseous volume. So जैसे कि नाम में ही बताया कि ये लॉ किसने प्रपोज किया होगा, this law was proposed by, this law was given by Gay-Lussac. This law was given by Gay-Lussac. The law states that the law states that let's see the statement. Under same condition of under same condition of pressure and temperature, pressure and temperature, whenever gases react, whenever gases react or combine or produce or produce the volume of reacting gases, then the volume of reacting gases is always a simple whole number. Simple whole number. इस लॉ को हम एक तरीके से स्टेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि when gases combine
are produced in a chemical reaction in a chemical reaction, they do so in a simple ratio of whole number. चलो इसी चीज को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाऊं तो ये आपको देते हैं अमोनिया गैस. They will produce ammonia gas. In this reaction is not balanced. Let's balance this reaction. Here we keep 3 moles of hydrogen gas, then we will get 2 moles of nitrogen gas. So this reaction says that when 1 volume of nitrogen gas reacts with 3 volumes of hydrogen gas, it will produce 2 volume of ammonia gas. Hence, the ratio of these gases, that is nitrogen is to hydrogen is to ammonia, in this reaction is 1:3:2. Let's take another example. If we take another gases, that is, let's have hydrogen gas when combines with oxygen gas, it produce, let's water gas, that is water vapors. Let's balance this reaction 2:2. In this reaction, we can say that 2 volume of hydrogen gas reacts with 1 volume of oxygen gas to produce 2 volume of water. So the ratio of their volumes, that is hydrogen gas is to oxygen gas is to water, is simply 2:1:2. So in this law, we have seen that when gases combines or produce, their volume is always in a ratio of simple whole numbers. Let's take another example. For example, if we take H2 gas when reacts with Cl2 gas, it produces HCl gas. If I balance this reaction from left hand side, that is reactant side, by keeping half and half, so this reaction says that the half volume of hydrogen gas when reacts with half volume of chlorine gas, it produces 1 volume of HCl gas. So in this reaction, the ratio of hydrogen gas is to chlorine gas is to HCl gas is 1:2:1:1. But this is not a simple whole number. We can make, this is not simple whole number, not a simple ratio, whole number. But we can make it as whole number by multiplying by 2. What we get? 1:1:2. This is the ratio of simple whole number for hydrogen gas is to chlorine gas is to HCl gas. Hope you understand the meaning of simple whole number. Next, this is the very simple law, that is law of gaseous volume. This law is also called as law of combining volume. Law of combining volume. Law of combining volume. It's very simple. Next is Avogadro's law. Next one is Avogadro's law. Let's see what is Avogadro's law.
The name suggested this law was given by Avogadro. The law states that the law states that at same temperature and pressure, same temperature and pressure, equal volume of all gases contains contains equal number of molecules. Equal number of molecules. Let's elaborate this with an example. Avogadro लॉ बोलता है कि अगर आपके पास टू और मोर देन टू डिफरेंट गैसेस है, फॉर एग्जांपल you have three gases, that is O2 gas, H2 gas, and Cl2 gas. These three are different gases, but these three gases जहां पे हमने स्टोर किया है, जहां पे रखा है, वहां का टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर सबके लिए सेम है। टेम्परेचर एंड प्रेशर सबके लिए सेम है। लॉ का स्टेटमेंट अगर देखें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मींस अगर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 10 लीटर है, सेम हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम 10 लीटर है, और Cl2 गैस का वॉल्यूम भी 10 लीटर है, तो जितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस में होंगे, दैट इज लेट्स हैव कि 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंटेन फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स, तो सेम हाइड्रोजन गैस के 10 लीटर में भी 100 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और क्लोरीन गैस के 100 लीटर में 100 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ सेज दैट कि जब टेम्परेचर और प्रेशर आपका सेम हो या कांस्टेंट हो, तो डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम अगर इक्वल हो जाए, तो उनके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाते हैं। इसे ही हम मोल कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हेन व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, that is V is directly proportional to number of moles, simply. So we have discussed all five laws, that is from initial. Let's see. First one is law of conservation of mass. So in this law we have to just focus on balanced chemical reaction. जो भी रिएक्शन बैलेंस्ड है, मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स जिसमें सेम होता है, वो केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करते हैं। नेक्स्ट दूसरा लॉ जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो भी एलिमेंट्स, जो भी केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स का मासेस उसके सोर्स के ऊपर जरा भी डिपेंड नहीं करता है। ये बात इसमें नोट करने वाली है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसके केमिकल कंपाउंड जिन भी एलिमेंट्स का बना है, उस एलिमेंट्स के मासेस उनके सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड वन अगर देखें, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमें बस इतना पॉइंट याद रखना है कि कोई भी एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है। बस इसमें कंडीशन क्या है कि जो कंबाइन होने वाला एलिमेंट है, उसका मास जिसके साथ कंबाइन हो रहा है उनके साथ सेम चाहिए, सो दैट अदर एलिमेंट जो कंबाइन होने वाले एलिमेंट से उनका मास कैसे आता है, एक सिंपल होल नंबर में आता है। नेक्स्ट जो लॉ है वो है गे लूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे लूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में हमने देखा कि
जब भी गैसेस रिएक्ट होती है या प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर उनका वॉल्यूम का रेशो लिया जाए तो वॉल्यूम का रेशो एक सिंपल होल नंबर होता है। एंड लास्ट में हमने देखा एवोगैड्रोस लॉ। सो एवोगैड्रोस लॉ में जो पिन पॉइंट है, एवोगैड्रोस लॉ में अगर मैं मोर देन टू डिफरेंट गैसेस लेता हूँ और उनका वॉल्यूम सेम हो और और सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा जाए, तो उनमें जितने मॉलिक्यूल, सभी गैसेस में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गैस लॉज। आज हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, कल की क्लास में हम गैस लॉज पढ़ेंगे।